hosting this function in the District Bar Association Hoshiarpur, and we are indeed welcoming everyone here with an open heart. Now, I would like to call upon Advocate Harinder Flora sir for the welcome ceremony of our dignitaries. Thank you, madam. First of all, I welcome Honorable Justice Mr. Lok Jain, our District and Session Judge Mr. Job, and warm welcome Manisha Agarwal from Supreme Court. She's basically speaker for the this session, and President of District Bar Association Shahpur, Mr. Ranjit Kumar, General Secretary Madam Nanda, and our President Punjab State Adivakta Parishad Mr. Soni, and General Secretary Mr. Akhilesh Vyas, and all the respectable fellows, advocates, ladies and gentlemen. आज इस फंक्शन ਜਾਂ ਜੋ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਦਿਵਿਆ ਮੈਨਨ ਮੈਮ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਅਵਤਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗੇ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਗੈਸਟ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਦਿਵਿਆ ਮੈਨਨ ਪਲੀਜ਼। I would like to call upon ex-President Mr. R.P. Dheer and Narendra Sir Joshi to please welcome our Honorable Justice Mr. Alok Jain today and facilitate him with a small token of love. A huge round of applause would be welcoming. Thank you, sir. I would now like to request Advocate Wincy Malik and Madam Neeru Thareja from Mohali to please come and facilitate our keynote speaker of today, Advocate Manisha Agrawal ma'am. A huge round of applause, please. Thank you, ma'am. I would now like to request Advocate V.K. Pardesi sir and Advocate Tarlochan Singh, who would now facilitate our District and Sessions Judge, Shri Dilbag Singh Johal ji. Also joining with them, District Bar Association President, Mr. Ranjit Kumar. I would now like to call upon Advocate S.P. Rana and Advocate Anil Sharma from Amritsar to please come and facilitate Mr. Ranveer Singh Kharkali ji. Thank you, sir. I would now like to call upon Advocate Aman Malik and Advocate Rishabh Agarwal, who has joined us here from Pathankot, to please come and facilitate Advocate Vivek Soni ji. Thank you for joining us. I would now like to call upon Advocate Arvind Gautam and Advocate Amrit Singh, who has joined us from Ludhiana, to please come and facilitate Advocate Akhilesh Vyas.
Thank you, sir. I would now like to call upon Mr. Sushant Sharma, who has joined us from Bathinda, and Madam Tanvi, who has joined us from Malerkotla, to please come and facilitate the District Bar Association President, Mr. Ranjit Kumar. Mr. Umesh Jain Jain from Amritsar. I see Madam Tanvi has not joined us from Malerkotla. Mr. Umesh, you would please take the honor to honor our District Bar Association President, Mr. Ranjit Kumar. A huge round of applause. He's one among us. Thank you, sir. I would now like to call upon Mr. Sahil Gupta to please come and facilitate Madam Rajni Nanda. Mr. Sahil Gupta has today joined us from Firozpur. I thank you for joining us today. And Mr. Saurav Kumar from Roopnagar to please come and join us and facilitate Madam Rajni Nanda. As everyone has now been warmly welcomed with a small token of love, I would now like to invite the General Secretary of Adhivakta Parishad, Advocate Akhilesh Vyas, sir, to please come on the dais and explain about the working of his organization. सभी को नमस्कार। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं वुमेन्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए। अपनी वक्तव्य को रखने से पहले मैं आज के हमारे चीफ गेस्ट न्यायाधीश ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस आलोक जैन जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने बहुत ही कीमती समय में से हमें आज यहाँ आने का समय दिया। और उसी के साथ मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जब हम लॉर्डशिप्स को इनवाइट करने गए तो ही हैड अ वेरी हेक्टिक शेड्यूल फॉर द एंटायर वीक, सो बट स्टिल ही कंसेंटेड टू ग्रेस द ओकेजन। एंड आई थिंक जैसा कि कहा जाता है हिंदी में कि अपनी करकल ध्वनि से हम लोगों को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए। Now proceeding further, it is for the first time that in the state of Punjab, Supreme Court की महिला अधिवक्ता मनीषा अग्रवाल जी ने consent दिया that she will be here gracing the occasion along with us, and so she is here. Again, I would like to thank her that she is present here to grace the occasion. We are very thankful for your presence, ma'am. हमें कंसेंट देने के लिए, हमें प्रेमिसेस में हेल्प करने के लिए और हमें इस ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए आई वुड बी फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स इफ आई डोंट थैंक द ऑनरेबल सेशन जज श्री दिलबाग सिंह जोहल जी that who due to his consent that the entire function has been organized. We are very thankful to you, sir. Ranjit Kumar Kitty ji, he is present and he has always helped us and always helped the bar to be in a flourishing mode. So अधिवक्ता परिषद तहे दिल से इनका शुक्रगुजार है। लास्टली हमारे बड़े भाई और हमारे मार्गदर्शक रणवीर सिंह खड़काली जी जो हमारे साथ पूर्ण तैयारी में लगे रहे, तो मैं बहुत बहुत इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये आए और इन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। अधिवक्ता परिषद बहुत सारे लोग यहाँ पे सीनियर बैठे हैं, कुछ फाउंडिंग मेंबर्स भी बैठे हैं। जो अधिवक्ता परिषद पंजाब का
मोटो जो हम लेके चलते हैं, न्याय मम धर्म, जिसको अगर मीनिंग दिया जाए इन लेमैन्स लैंग्वेज, कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को न्याय कैसे दिलाया जाए, दिस इज व्हाट द एंटायर मोटो ऑफ अधिवक्ता परिषद इज. जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बताऊं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज अधिवक्ता परिषद की पूरे देश में इकाइयां हैं. सो ऐसे संगठन के साथ हम मूल रूप से अगर आगे बढ़े हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो है मैं साझा करना चाहूँगा कि अधिवक्ता परिषद पंजाब का कंट्रीब्यूशन क्या रहा. कोरोना काल में नई जब कमेटी का गठन हुआ तो उसमें अलग अलग जिम्मेवारियां मिली. तो कोरोना काल में जब चीज़ें नहीं ठीक चल रही थी उस समय यूट्यूब सेशंस हमने ऑर्गेनाइज किए. तो 9 सिटिंग जजेस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट consented to participate in all those sessions, and starting from Honorable Mr. Justice Arun Palli, who spoke on the rent law, Honorable Mr. Justice Arvind Singh Sangwan, who participated and consented for the session of NDPS Act, and Honorable Mr. Justice Khetarpal, who spoke on the Hindu Succession Act, and subsequently Honorable Mr. Justice Alka Sareen, she spoke on right to education. And proceeding there further, there were almost two honorable retired judges of the High Court as well, who participated in the session. So subsequently, there were almost in every session, it was a house full packed session by all the members who were present from almost different parts of the state. So today also, proceeding further with the session, we always wanted कि जितने भी लोग दूर दराज अपनी डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, चाहे वो फिरोजपुर हो चाहे पठानकोट हो, हमारी टीम ने कोशिश की कि हम सबको बेस आउट टच करें एंड एवरीबडी कंसेंटेड टू बी हेयर. एंड काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन में सब लोग यहाँ पे आए. उसके आगे चलते हुए लास्ट ईयर जलंधर में हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संदीप मौदगिल जी वॉज द चीफ गेस्ट हु प्रिजाइडेड ओवर द सेशन. And Jalandhar unit along with the Adhivakta Bar Association celebrated the occasion in a very nice manner. And thereafter Swami Vivekanand Jayanti was also celebrated. Now proceeding that almost 23 plus 1 unit, 23 districts and plus 1 High Court unit we have, in which 20 units are actively working. इस चीज़ का जो सहरा है मैं रणवीर सिंह खड़काली जी को दूंगा, बिकॉज जब इन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया तो उस समय सिर्फ 10 यूनिट्स थे जो वर्किंग थे. तो मैं अपनी स्टेट यूनिट की तरफ से इनकी गाइडेंस, उनके मार्गदर्शन पे हम चले और पिछले 6 से 8 महीने में वी हैव कन्वर्टेड दोज 10 यूनिट्स इनटू 20 यूनिट्स. और सम ऑफ द यूनिट्स स्पेसिफिकली द यूनिट ऑफ पटियाला एज वेल एज अमृतसर, उनका गठन जो है वो आयाम वाइज भी हो चुका है. सो उसके आगे चलते हुए अभी जो अधिवक्ता परिषद का सेटअप हुआ उसमें 4 डिफरेंट आयाम्स, जिसको हम कैटेगरीज कहते हैं, दे वर डिफाइंड, जिसमें एक था संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इज द लिटिगेशन, एंड थर्ड इज द आउटरीच, एंड फोर्थ इज द थिंक टैंक. अभी ये 4 जो आयाम हैं उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज में वी हैव द participations going on with regard to the state and the center level also. तो ये अधिवक्ता परिषद पंजाब ने कुछ कार्य किए. अभी आगे चलते हुए जब आज का दिवस जो है उसको हम हर साल मनाते हैं. पिछले साल फिरोजपुर बार ने ये जिम्मेवारी ली थी, तो उस समय श्रीमती विनय कपूर जी, who was the vice chancellor for the B.R. Ambedkar Law University in Haryana, she participated as the chief guest, and the learned CGM of the Firozpur bar was also there. So they all presided over the session last year, and the worthy Advocate General for the Haryana state, Shri Baldevraj Mahajan ji, and our organizing secretary Shri Hari Borikar ji, they all were there in the Firozpur session. जब last year हमने महिला दिवस का गठन किया था तो उसको भी हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया. वी आर थैंकफुल टू द फिरोजपुर बार एसोसिएशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और फिरोजपुर के यूनिट के. अभी ना ज़्यादा समय लेते हुए अभी आगे प्रोसीड करते हुए आई वुड ओनली से कि महिला दिवस महिलाओं को सम्मान दिलाने, उनके अधिकार दिलाने, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए मनाया जाता है. सो यहाँ अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं सिर्फ आई वुड लाइक टू एंड ऑन द नोट कि प्रेम अधूरा है औरत के बिना,
मान अधूरा है औरत के बिना, घर अधूरा है औरत के बिना, और संसार अधूरा है औरत के बिना. So we have come at this stage that we cannot digress from a situation that we don't have to celebrate this day. So we all have to celebrate the day, and it is not a day which only women have to celebrate. हमें मन से संचालित करना है that the male members are equally celebrating the day as they are part and parcel of the entire bar. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Adhivakta Parishad is no doubt working tirelessly for the last man standing so that everyone gets justice. And I believe as long as the ends are to achieve justice, no matter what the means, it's equally appreciable even if it's done by someone you don't support of. This annual celebration is not just about acknowledging the achievements of women, but also about fostering an environment where every woman feels valued and included. India is a landscape of diversity and rich history, and women, though silently or loudly, have always contributed to nation building. Today's scenario is no different. And today, given that now we have our constitution, it's an opportunity to recommit ourselves to the principles of equality and justice for all. I would now like to call upon Advocate Ishani, a member of this bar, to please come and share her views with us. Thank you, ma'am. Swami Vivekananda said in one of his famous speeches, the best thermometer to measure the progress of a nation is its treatment of its women. Why would a prominent thinker say this? I would like to express my profound gratitude to all of the distinguished dignitaries and my fellow colleagues who are in attendance today. When we measure anything, we look after every aspect. And in a society where one gender is focused on earning masculine power, the other has to prove worth before working in an eminent position, or as simple as earning an education or publishing. Many a time it has been said that to be a woman is to be a burden, only to prove it wrong, as to be soft is to be powerful. The need for women's empowerment started from the very beginning, when even the basic rights started meaning a privilege. Women's empowerment include everything, ranging from emotional independence, financial, legal, and most importantly, freedom of choice. There have been many women in the history and present who acted as the pathfinders for women's empowerment. Naming some, Amrita Pritam, through her literary works, brought the atrocities faced by the women in the countryside. Simone de Beauvoir, a French writer, stated that men had made the women other in society by the application of false aura of mystery around them, and used this as an excuse not to understand women or their problems and not to help them, and that this stereotyping was always done in societies by the group higher in the hierarchy to the group lower in the hierarchy. Her statements have been proved many times before. Let it be Mary Evans, Emily Dickinson, who had to write under the pseudonym of a male writer to publish their work, or Esther Lederberg, a microbiologist who conducted groundbreaking research in the field of genetics and helped her husband win a Nobel Prize in 1958, but not cited in the award. Major Priya Jingan, who had to earn the salute of a Jawan as she was a lady officer and her officer rank wasn't enough. In today's generation, women prefer to empower themselves without asking for aid. The law has taken the responsibility to bring protection from papers to reality by introducing laws and guarding honor with utmost priority. Imagine a courtroom in India, once dominated by male figures in black robes, where the gavel wielded authority and the voices of women were scarcely heard. Now picture that same courtroom transformed into a diverse arena, where women lawyers stand shoulder to shoulder with their male counterparts, advocating for justice and equality. In this transformed landscape, women lawyers like Arundhati Katju and Menka Guruswamy, who played pivotal roles in the legal battle for LGBTQ rights, have emerged as trailblazers, challenging societal norms and reshaping legal narratives.
Their landmark victory in the decriminalization of homosexuality in India serves as a beacon of hope and inspiration for women across the legal spectrum. Furthermore, consider the rise of women judges in India's judiciary, exemplified by figures like Justice Indu Malhotra, the first woman to be appointed as a Supreme Court judge directly from the bar. Her appointment signifies a shift towards greater gender inclusivity and representation within the highest echelons of the legal system. Moreover, delve into the realm of corporate law, where women lawyers are making significant strides in boardrooms and law firms alike. Figures like Zia Moody, founder of one of India's leading law firms, have shattered glass ceilings and paved the way for future generations of women to excel in traditionally male dominated fields. The world is pacing towards an inclusive approach for both genders, opening doors in the defense sector by allowing a permanent commission for lady officers, the Council of Ministers by introducing women political leaders in power, and the economic sector as well. The easiest way to be empowered is to be financially independent, and that can only be achieved if each figure in authority takes the responsibility to aware women of the opportunities and women opt to evolve through resilience and hard work in every field. As there are still miles of glass ceilings to break and establish a position of equality, I will wind my speech by saying that once we start believing that the world is a product of feminine and masculine working together, only then there can be a balance. Thank you, Jai Hind. It is indeed a feeling of immense pride to be listening to one of the fellow advocates, a young, thriving woman on her own in this time. Thank you for that beautiful speech. I would now like to call upon Madam Advocate Rajni Nanda to please come and share her thoughts with us. Thank you, Divya. First of all, I welcome to very honorable judge, Punjab and Haryana High Court, Chandigarh, come administrative judge of Hoshiarpur Session Division, Shri Alok Jain, along with learned district and session judge Hoshiarpur, Shri Dilbag Singh Jahal, Esquire to all the judicial officer of district Hoshiarpur. I welcome all the dignitaries present over there, along with my seniors and fellow fraternity on this occasion. Today's topic: transformation of women vis-a-vis the Indian legal system. Like India is a developing country, but until and unless women don't get their status and respect, India can't be developed. Due to gender inequality, women are left behind. The position and the status of women had worsened with other severe offences like dowry theft, female feticide, and infanticide. It forced abortions and added domestic violence, physical harassment, and other which continue till date in modern India. In the nutshell, women were treated by Indian patriarchal society in every age as a slave without remuneration, status, and the dignity. Our constitution has empowered women equally with Article 14. Over the past 2 decades, violence against a woman has come to be understood as a form of discrimination and violation of human rights. The Constitution guaranteed that all the citizens of India, including the women, the fundamental rights to live in peace and the harmony. Not to say so the in the advanced era of the feminism, when it is an agenda, stress on the keynote of individuality and embracing womanhood, the prevailing sources of the violence against the women threaten to topple the pillars on which entire nation of feminism is based. Women are considered as a better half and religious partner of their husband, which means the half part of the man belongs to his wife. Apart from these, there are some peoples who still exist while saying a girl child is burden towards the family, so it better to vote the baby. It is because there is a lack of knowledge that in today's world a girl can do everything, just she needs support
and love to care for her efforts to overcome. So, not to take so much time, I introduce keynote speaker Ms. Manisha Agarwal, an advocate practicing in the Supreme Court of India since 2006. She is also representing Haryana government before Supreme Court. She argued the same-sex marriage on the behalf of an intervener. She is an expert member of the POSH, that is the Prevention of Sexual Harassment Committee of Navy, member of the various colleges and the companies. She deals with various departments like Armed Forces of India, National Commission for Women. Now, I would request our today keynote speaker, Ms. Manisha Agarwal, to come to dais to express your words on the today's topic. कमाही देवी और गणना साहिब की धरती होशियारपुर को प्रणाम। पंजाब के दूर दूर से सब डिस्ट्रिक्ट से आए हुए सभी वकीलों को नमस्ते, सत श्री अकाल, आदरणीय मंच और मेरे सभी प्यारे अधिवक्ता बंधु और भगिनियों। इट्स इंडीड अ प्लेजर यहाँ आके बोलना, और यहाँ आके जब फेलिसिटेशन हो रही थी तो कितने दूर दूर से, कितने सारे जिलों से यहाँ पे विमेंस डे में पार्ट लेने के लिए एडवोकेट्स आए हुए हैं। देख के मुझे ऐसा लग रहा है आई एम सो ऑनर्ड टू बी हियर। और जब बात होती है महिला दिवस की, विमेंस डे की, जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो मैं एक ऑनेस्ट कन्फेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। कोई भी और टॉपिक होता है ना तो हम पढ़ लेते हैं, रिसर्च कर लेते हैं, अपने व्यूज ऐड कर लेते हैं और बड़े अच्छे से जाके बोल देते हैं। लेकिन जब बात आती है ना महिला दिवस की, तो मैं तो बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं ये एक ऑनेस्ट अपने दिल की बात शेयर करूंगी कि मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। और वो कंफ्यूजन ये है कि पिछले कई साल से, कई दशकों से हम ये बोलते आ रहे हैं कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं और महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर सकती हैं, घर से बाहर निकल के पैसा कमा के दिखा सकती हैं, समाज का काम करके दिखा सकती हैं। और इस रास्ते पे चलते चलते हम बहुत आगे भी बढ़ गए हैं। हम महिलाएं टीचर्स, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, जजेस भी बन गए हैं। पर क्या हमने कभी ये सोच लिया क्या कि घर का काम करना एक छोटा काम है, बच्चे को देखना, खाना खिलाना, घर संभालना एक छोटा काम है, और जब घर से बाहर निकल के काम करेंगे तभी हम पुरुषों के बराबर, तभी महिला पुरुषों के बराबर आ पाएगी? क्या रिस्पेक्ट लेने के लिए घर से बाहर निकल के काम करना ही जरूरी है क्या? और दूसरी बात ये कि क्या हमने कंफ्यूज कर दिया इक्वालिटी और सिमिलैरिटी को? इक्वालिटी यानी बराबर का ट्रीटमेंट, और सिमिलैरिटी यानी किसी किसी और के जैसा बन जाना। तो ये कुछ सवाल है, कुछ कंफ्यूजन है, एंड वेरी ऑनेस्टली शेयरिंग विद यू, मेरे पास इसके जवाब बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं तो खुद ही, मेरा तो पैशन है वकालत, और मैं घर से बाहर निकल के जब तक काम नहीं करती हूँ तो मुझे तो सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं। तो बिकॉज हम सब यहाँ पे एडवोकेट्स इकट्ठे हैं, जजेस इकट्ठे हैं, और हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी पावर होती है, पावर टू थिंक। हम थॉट प्रोवोकिंग बातों को एक्सेप्ट कर सकते हैं और हम सोच सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैं जस्ट एक प्रश्न सबके सामने रखना चाहती हूँ कि हम ये सोचें कि बराबरी और एक जैसा हो जाना, क्या हम क्या चाहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये कि अब इसका कोई जवाब तो नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कि धीरे धीरे हम जैसा देखते हैं कि समाज में परिवर्तन आ रहा है, तो अगर अपनी लाइफ से शेयर करूं तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है वकालत भी करने में, समाज का काम भी करने में,
और अपने परिवार को बहुत प्यार देने में और प्यार लेने में। तो मे भी शायद कहीं एक बैलेंस में इसका आंसर छिपा हो, जहाँ पे पुरुष और महिला मिलकर समाज भी चला रहे हैं, मिलकर बाहर जाके काम भी कर रहे हैं और मिलकर घर भी चला रहे हैं। तो फिर रिस्पेक्ट किसकी? रिस्पेक्ट क्या पैसा कमाने की, या रिस्पेक्ट घर चलाने की? रिस्पेक्ट शायद उसकी होनी चाहिए जो अपने देश को आगे ले जा रहा है। तो अब वो समय आ गया है जब महिलाएं कुछ भी प्रूव करने के लिए घर से बाहर जाके काम नहीं कर रही। महिलाएं किसी से भी कंधे से कंधा मिला के जाके घर से बाहर काम नहीं कर रही। महिलाएं भी राष्ट्र की उन्नति के लिए, राष्ट्र का जीडीपी बढ़े, पर कैपिटा इनकम बढ़े, महिलाएं और पुरुष इसके लिए काम करते हैं। और अपने देश में अच्छी फ्यूचर जनरेशन्स हों, बच्चे हों, बच्चे खुशहाल हों, उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी हो, महिला और पुरुष मिलके इसके लिए भी काम करते हैं। और महिला और पुरुष मिलके इसके अलावा भी समाज के लिए भी काम करते हैं। तो फिर शायद हम इक्वालिटी की बात, इक्वालिटी नहीं ढूंढ रहे थे, हम जो ढूंढ रहे थे वो है वननेस। बिकॉज इक्वालिटी वहां पे होती है जहां पे दो एक से लोगों को कंपेयर करते हैं। दो एक जैसे फल, या दो एक जैसे कपड़े, दो एक जैसे लोग। जब हम दो एक जैसी चीजों को कंपेयर करेंगे तो हम बोलेंगे कि यहाँ इक्वालिटी है या यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। मगर जहाँ पे हमें सबके लिए रिस्पेक्ट चाहिए, सबके लिए अपॉर्चुनिटीज चाहिए, वहां पे शायद हम वननेस ढूंढ रहे हैं। सो मे बी दिस इज द टाइम, बिकॉज एडवोकेट से ही एक सोच का अंतर शुरू होता है। तो क्यों ना हम अब ऐसे सोचें कि वी वांट वननेस बिटवीन ऑल द जेंडर्स इन द सोसाइटी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द इंडियन लीगल सिस्टम, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ विमेन विज़ावी इंडियन लीगल सिस्टम। तो इंडियन लीगल सिस्टम में बहुत सारे ऐसे चेंजेस रिसेंटली भी आए हैं और हिस्ट्री में, पास्ट में भी आते रहे हैं, जिससे भारत में नारियों का जो स्थान था वो और ऊंचा होता गया। तो तो इसमें है बहुत सारे लॉज। बट क्योंकि आप सब तो खुद ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडवोकेट्स हो, आप ही केस बनाते हो, आप ही केस चलाते हो, और फिर उसी के बाद केस हमारे पास आता है, तो मैं आपके साथ में ट्रायल, आपके साथ में लॉज डिस्कस करूंगी तो सूरज को दिए की तरह दिखाने जैसा काम हो जाएगा। बट वेरी शॉर्टली, starting right from the Sati Abolition Act, we have many provisions in the IPC: eve teasing, chain snatching, sexual harassment, rape, domestic harassment, honor killing, जिसके केसेस डे इन एंड डे आउट हम सब एडवोकेट्स करते ही हैं, तो इसकी डिटेल में जाने का तो कोई फायदा नहीं। सेक्शन 28, अरेस्ट एंड सर्च ऑफ वुमेन बाय अनदर फीमेल। तो भारतीय नागरिक संहिता ने इसमें एक प्रोविजन ऐड किया है, वो ध्यान दिलाना चाहूंगी कि जब भी किसी फीमेल को अरेस्ट करना होगा तो उसको अरेस्ट करने के साथ साथ पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा उस महिला के रिश्तेदारों को कि वो अरेस्ट हो गई है, और वो अरेस्ट होके उसके वेयर अबाउट्स क्या है, वो कहाँ पे है। देन वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्ट्स इन इंडिया: इक्वल रेन्यूमरेशन एक्ट फॉर बोथ द जेंडर्स, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, immoral traffic prevention act, maternity benefit act, medical termination of pregnancy act, preconception and prenatal diagnostic techniques act, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005, जिसमें महिलाओं को अधिकार मिला पैतृक संपत्ति में, एंड वी हैव सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, पॉश एक्ट। पॉश एक्ट के अंदर, एज ऑल ऑफ अस ऑलरेडी नो, कि पॉश एक्ट के अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी सारे ऑफिसेज में होती है, और कभी भी अगर किसी महिला को लगता है कि उसके साथ में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुई है तो वो जाके कंप्लेंट कर सकती है, और वो कंप्लेंट उसके बाद में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी उसको ट्राई करती है, और अगर ये पाती है कि हैरेसमेंट हुआ है तो जिसने हैरेसमेंट किया है उसको पनिश भी किया जा सकता है। But these are, मैं इसके डिटेल्स में जाना, अगेन all of us are very much aware about all these laws. There are some judgments
जो बहुत रिसेंटली आए हैं और जिन्होंने महिलाओं के अधिकार को बहुत इम्पैक्ट किया है, पॉजिटिव इम्पैक्ट किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ट्रिपल तलाक जजमेंट. ट्रिपल तलाक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि एक तरफा अधिकार किसी पुरुष को नहीं है कि वो तलाक 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 बोलकर अपनी बीवी से अलग हो जाए. सो तलाक इज नॉट अ वन साइडेड प्रोसेस. तलाक, if it has to be a two-sided process. Then we have abrogation of Article 370. सरकार ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगाई. तो इसका फायदा क्या हुआ? इसका एक बहुत सारे फायदों में से एक फायदा ये हुआ कि हमारी जो कश्मीर में रहने वाली कश्मीरी बहनें हैं, जब पहले वो अगर कश्मीर से बाहर शादी करती थी तो उनके पास में ना तो सिटीजनशिप रहती थी और ना ही उनको परिवार की संपत्ति में अधिकार रहता था. तो विद द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 अब हमारी कश्मीर की बहनें पूरे भारत में कहीं भी शादी कर सकती हैं बिना पैतृक संपत्ति में अधिकार खोए. द नेक्स्ट जजमेंट इज द सेम सेक्स मैरिज जजमेंट. इस जजमेंट में मैं एक इंटरवीनर के लिए अपियर हुई थी और इसके सारे आर्ग्यूमेंट सुने थे. तो सेम सेक्स मैरिज जजमेंट के बारे में जितनी रिपोर्टिंग नॉर्मली हुई है वो उससे ज़्यादा ब्रेथ है उस केस की. उस केस में ये भी कहा गया था कि एवरीबडी शुड बी अलाउड टू चूज देयर जेंडर. उसमें ये कहा गया था कि आप किसी भी जेंडर में बॉर्न हुए हो लेकिन आप चूज कर सकते हो कि आपको क्या कहा जाएगा. तो हमने ये बोला और भारत सरकार ने भी ये बोला कि फिर अगर ये सब चेंजेस हम कर देंगे तो कल को कोई भी जना किसी भी वुमन के ऊपर क्राइम करेगा और कहेगा बट मैं तो वुमन हूं, मैं तो महिला हूं, मेरे पे केस कैसे चलाओगे? बिकॉज हमारे तो आईपीसी में बहुत सारे क्राइम अगेंस्ट वुमेन ऐसे हैं जो कि पनिशेबल टू मैन है. तो फिर वो लॉज भी बदलोगे? फिर बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जहां महिलाओं को स्पेशल अधिकार है, जहां फॉर एग्जांपल महिलाओं को रिजर्वेशन है. व्हाट हैपेंस इफ अ मैन कम्स एंड सेज मैं तो महिला हूं? तो रिजर्वेशन के प्रोविजंस तो गए काम से. Then in European countries, what is happening now is there are common toilets and common hostels for males and females. तो वहां पे जिस तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है और वो प्रूव करना मुश्किल है. तो विद द सेम सेक्स मैरिज जजमेंट हमने एक बहुत बड़ी विपत्ति को टाल दिया. हमने महिलाओं को सेफ रहने दिया. नेक्स्ट जजमेंट इज एक्स वर्सेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट. कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट में अब तक यदि कोई मैरिड लेडी अबॉर्शन कराना चाहती थी तो करा सकती थी, लेकिन अगर कोई अनमैरिड लेडी भी अब अपने आप को ऐसी स्थिति में पाएगी तो उसको भी अलाउड है. नेक्स्ट इज मिसेस अकेला ललिता वर्सेस कोंडा हनुमंथा राव एंड अदर्स. इस केस के फैक्ट्स ये थे कि एक हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे थे. अनफॉर्चुनेटली हस्बैंड की डेथ हो गई. वाइफ ने दोबारा शादी की और झगड़ा ये खड़ा हुआ कि अब ये जो बच्चे थे प्रीवियस मैरिज से इनका सरनेम क्या होगा. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अधिकार उस महिला को है, वो डिसाइड करेगी कि इन बच्चों का सरनेम क्या होगा. सो राइट टू डिसाइड द सरनेम ऑफ चिल्ड्रन इज विद द वुमन, विद द बायोलॉजिकल मदर. दीपिका सिंह वर्सेस कैट. कोर्ट ने कहा वुमन कैन नॉट बी डिक्लाइंड मैटरनिटी लीव on the ground that her spouse has 2 children from earlier marriage. किसी के पिछली शादी से अगर बच्चे हैं और इस शादी में दोबारा से बच्चे हुए हैं तो दोबारा से मैटरनिटी लीव मिलेगी. सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया, जिसमें कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो लेडी ऑफिसर्स थी कहा गया कि दे आर आल्सो एलिजिबल एंड दे हैव आल्सो अ राइट टू चूज फॉर परमानेंट कमीशन. महिलाओं को समानता का अधिकार इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में. देन वी हैव अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. अपर्णा भट्ट वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में कोर्ट ने कहा था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के क्राइम में बेल की कंडीशन राखी बांधना नहीं हो सकती. और फिर कोर्ट ने डिटेल्ड गाइडलाइंस दी. कोर्ट ने कहा कि जहां क्राइम अगेंस्ट वुमेन होते हैं वहां पर बेल की कंडीशन प्रॉमिस टू मैरी भी नहीं हो सकती.
और वहां पे नो, द गर्ल कैन नॉट बी इंसिस्टेड कि अपॉलॉजी के बदले में वो केस को सेटल कर ले। एंड देर आर, इसी केस में ये भी कहा गया कि प्लीडिंग्स में और जजमेंट्स में कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? एक्सप्रेसिंग एनी स्टेरियोटाइप ओपिनियन, जैसे कि महिलाएं वीक होती हैं, कमजोर होती हैं, अपने डिसीजंस नहीं ले सकती, महिलाओं को ही घर का काम करना ज्यादा अच्छा आता है, और महिलाओं को ओबीडियंट होना चाहिए, और ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं होनी चाहिए कि जिससे हम बता रहे हो कि महिलाओं का रोल क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वी शुड नॉट इंक्लूड ऑल दीज थिंग्स। Then there is a very recent judgment of April only, April 2024, March 2024 की judgment है, रेशमा वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, इट्स अ दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट। एंड इन दिस मैटर कुछ पर्दा नशीन औरतों ने ये कंप्लेंट की थी कि पुलिस आई और हमको पुलिस स्टेशन ले गई और हमारा जो है हमें पर्दा नहीं करने दिया गया। तो उन्होंने कॉम्पेंसेशन मांगी थी और उन्होंने इंक्वायरी की रिलीफ मांगी थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि पुलिस की सेंसिटाइजेशन होनी चाहिए कि पर्दा इज एन असेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस एज वेल एज पर्दा कैन बी अ चॉइस ऑफ अ वुमन। इसलिए पुलिस विल बिहेव इन अ वेरी स्पेशल वे विद द पर्दा नशी वुमन। अब बाकी सारी रिलीफ तो कोर्ट ने ग्रांट कर दी। कोर्ट ने कहा कि डीसीपी के पास में इसको पिटीशन विल बी ट्रीटेड एज अ रिप्रेजेंटेशन एंड डीसीपी विल डिसाइड इंक्वायरी करके कि कुछ भी गलत हुआ है तो कंपेंसेशन दी जाए, इंक्वायरी हो, पनिशमेंट हो। सो फार एज द रिलीफ ऑफ सेंसिटाइजेशन इज कंसर्न, तो कोर्ट ने ये कहा कि पर्दा में गो अगेंस्ट द वेरी बेसिक नोशंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में तो आइडेंटिफिकेशन करनी होती है, एंड पर्दा में लीड टू अ सिचुएशन जहां पे लोगों को अनोनिमस रहने का अधिकार मिल जाए। सो कोर्ट ने कहा कि जो अधिकार सब महिलाओं को है वो पर्दा नशी महिलाओं को भी है। सर्च करना होगा तो लेडी पुलिस ऑफिसर ही करेगी, बट इसके ओवर एंड अबव पर्दा नशी वुमेन का कोई स्पेशल अधिकार तो नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू कोऑपरेट इन इन्वेस्टिगेशन। नाउ हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व। तो महिला दिवस की हम बात कर रहे हैं, और हमने बात की महिलाओं के अधिकारों की, और हमने बात की महिलाओं के रोल की, तो हम अब बात हमें ये भी करनी चाहिए कि एज अ वुमन हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। और मुझे लगता है सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेन की भी, और सब लोगों की, सब ह्यूमन बीइंग्स की, सब एडवोकेट्स की फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि एक ऐसा समय आना चाहिए जब स्पेशली अलग से महिला दिवस या पुरुष दिवस मनाने का कोई रीजन ना बचे। समाज में इतनी वननेस हो, स्पेशली व्हेन वी एंटर द कोर्ट रूम। व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी एंटर द कोर्ट रूम और हम देखते हैं बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, और वो अच्छे आर्ग्यूमेंट्स अगर एक लड़की कर रही है, एक लेडी कर रही है, तो फिर बात होती है कि एक महिला वकील ने बड़े अच्छे आर्ग्यूमेंट्स किए। या फिर कभी कभी ऐसी बात होती है एक महिला वकील ने तो बिल्कुल आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं किए। कभी कभी हम ऐसे बोलते हैं वो कोर्ट नंबर 21 में ना देयर इज अ लेडी जज सिटिंग, but generally I don't hear anybody say कि if there is a male judge sitting or there is a male advocate arguing. So first thing which we need when we enter to the court is, हम सारे लोग ना कोर्ट में एंटर करते हैं एज एडवोकेट्स, और हमारे वहां पे हम कैसे आर्ग्यू कर रहे हैं, क्या पॉइंट बोल रहे हैं, हमने कैसी फाइल पढ़ी है, और हम किस तरह से अपनी बात रख रहे हैं, इसमें जेंडर का कोई रोल ही नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो हम कैसे बोल रहे हैं, हम कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, हमारी बात कितनी रेलेवेंट है, और सामने वाले पे उसका कितना इम्पैक्ट हुआ, इसमें हमारे जेंडर का कोई रोल नहीं है। सो लेट अस कम आउट ऑफ बीइंग वुमन एंड बीइंग मेन इनसाइड कोर्ट रूम्स। वन मोर थिंग, कभी कभी ना ऐसे ऐसे हम सुनते हैं कि यहाँ पे ना महिलाओं को सुना नहीं जाता, या फिर मैं मेरे पास मूछे नहीं है ना इसलिए मेरे को कट शॉर्ट कर दिया। सो सेकंड इनविटेशन आई हैव एन इनविटेशन, लेट अस ऑल बी वेरी केयरफुल कि हमारे साथ जैसा भी बिहेवियर हो रहा है ना, उसमें हमारे जेंडर का कोई रोल नहीं है।
और अगर है भी ना, मान लो अज्यूमिंग कि कई बार जेंडर की वजह से भी कुछ हो रहा है, अगर हम इस जेंडरहुड से बाहर आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो कुछ भी अगर होता भी है तो भी नहीं होगा. लेट अस ऑल कंसिडर इट लाइक दिस. Another थिंग इज कि हमने बात की कि हमें अपने देश को आगे ले जाना है और हमें इस पर्पस के लिए काम करना है. हम कोर्ट में काम करते हैं तो उससे हम ऑफ कोर्स पैसे भी कमाते हैं, मगर हम अपने लीगल सिस्टम को एक नेक्स्ट लेवल पे भी ले जाते हैं और हम अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ भी लेके आते हैं. वी सर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस व्हेन वी आर्ग्यू अ गुड केस. तो जब हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं और साथ ही साथ हम सब, मेल हो फीमेल हो, हम सब के सब अपना घर भी देख रहे हैं, तो हमें कोई कुछ ऐसी चीजें चाहिए जिनसे कि हम बहुत सारे काम कर सकें. सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मेरे को, जिसने मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया, दैट इज माई लैपटॉप. सो इफ वी स्टार्ट वर्किंग एंड वी आर अ रिमोट ऑफिस और हम डायरी नहीं मेंटेन करते हैं, हमारी डायरी भी सब ऑनलाइन है. गूगल कैलेंडर, कितने लोग यहाँ पे गूगल कैलेंडर यूज करते हैं? some people are using Google Calendar. Google Calendar is a free app. अगर हम अपने केसेस गूगल कैलेंडर में डालेंगे तो वो जो गूगल कैलेंडर है वो, और प्रो वकील और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसको हम गूगल कैलेंडर से यदि सिंक कर लें, और वो महंगे सॉफ्टवेयर नहीं है, तो देन व्हाट हैपेंस इज कि डायरी में तो फिर भी एक आध केस छूट जाता है और डायरी मेंटेन करने के लिए एक क्लर्क चाहिए होता है. बट ये कुछ ऐसे एप्स है होते हैं कि जिनको यूज करने से घर बैठे रात में नींद खुल गई तो रात में देख लिया कि कल के केसेस तो पता चलो परसों के देख लूं, अगले हफ्ते के देख लूं. एंड देन दिस लैपटॉप, मैं तो अब वी डोंट यूज फिजिकल फाइल्स इन कोर्ट. मैं तो शताब्दी से आई थी तो मैंने एक फाइल प्रिपेयर कर ली है मंडे की, और अभी शताब्दी से जब वापस जाऊंगी तो एक ड्राफ्टिंग भी मैं प्रिपेयर कर लूंगी. सो ऑल इट टेक्स इज अ लैपटॉप. तो व्हाट हैपेंस इज देन वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर आवर फैमिली. सो फोन, इंटरनेट, लैपटॉप और सॉफ्टवेयर्स बहुत सारे जो अवेलेबल हैं, इफ वी स्टार्ट मेकिंग यूज ऑफ दीज थिंग्स, तो इससे हम सोचे चाहे ना सोचे, लेकिन इससे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत अच्छे से पूरी कर सकते हैं और इससे हमारे राइट्स भी हमें बहुत अच्छे से मिल सकते हैं. क्योंकि जब हम इनसे आर्ग्यू करते हैं ना तो हमें बहुत जल्दी जल्दी पेज नंबर्स हमारे सामने होते हैं इस पे. तो these are some of the things, and huh, I will end up by saying women are ready to be heard, not because they are women, but because they are competent and powerful. Thank you. Thank you so much, ma'am. I see how you were the right choice for this event to be the keynote speaker. The topics you touched about care and the struggle of choice that women often face to choose between their family and their profession was indeed a common problem of many of us. And indeed, the answer is finding the balance, and the ends is always nation building. Once again, thank you, ma'am, for that amazing and insightful speech. I would now like to call upon Mr. Ranbir Singh Kharkali ji, Zonal Secretary, Adhivakta Parishad, to please come and share his views with us. थैंक यू दीपा जी. आज हम छोटी काशी कहे जाने वाले इस होशियारपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं. सर्वप्रथम मैं इस छोटी काशी की धरती को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और माननीय न्यायमूर्ति श्रीमान आलोक जैन जी आज हमारे बीच में, इनकी गरिमामयी उपस्थिति को नमन करता हूँ. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिलबाग सिंह जी, हमारी की नोट स्पीकर मैडम मनीषा अग्रवाल जी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, अभी आपके सामने अपना वक्तव्य रख के गए, और कैसे इन्होंने आज की नारी, आज की महिला जो वर्किंग वुमेन है, कि कैसे हम तालमेल बैठाएं अपने सारे कामों में और कैसे अपडेट हों, तो ये वक्तव्य रखा. हमारे बीच में
हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री रणजीत कुमार जी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी मैडम रजनी नंदा जी, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट श्री विवेक सोनी जी, जनरल सेक्रेटरी श्री अखिलेश व्यास जी, और एक नाम और मैं लेना चाहूंगा, तो थोड़ा देरी से आए, हमारे नेशनल सेक्रेटरी मिस्टर पदम कांत जी हमारे बीच में है, मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। और मैं रणबीर कौशल जी से और गगन जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया हमारे नेशनल सेक्रेटरी का वेलकम करें। और आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि कृपया तालियों से स्वागत करें। और जितने भी पुरुष सदस्य हैं, मैं एक बार जरूर आपसे कहूंगा कि नारियों के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं। देखिए, हम आज यहां इकट्ठा हुए, महिला का हमारे जीवन में क्या योगदान है, क्या प्रेजेंस है। काइंडली कि जब हमने जन्म लिया तो माता के रूप में हमने महिला को पाया, जिसने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, हमें संस्कार दिए। थोड़े बड़े हुए तो बहन के रूप में हमें महिला का साथ मिला, और वो बहन जिससे नोक झोंक भी कितनी हो जाए, लेकिन उसका प्यार, बहन की ममता कम नहीं हुई। और उसके बाद जब हम बड़े हुए तो हमें बेटी के रूप में महिला का साथ मिला। इस सारे जीवन में महिलाओं का क्या योगदान है। एक मकान को घर बनाने वाली महिला के लिए हमें एक दिन निश्चित करना पड़ा अंतरराष्ट्रीय लेवल पे। इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों जरूरत पड़ी। 1908 में अमेरिका में एक मजदूर संगठन से इसकी शुरुआत हुई। 1908 में, आज अमेरिका भले ही कितना अग्रणी देश हो, लेकिन 1908 में महिलाओं को अमेरिका जैसे देश में कोई अधिकार नहीं थे। ना राइट टू वर्क था, ना राइट टू वोट था, ना राइट टू ओन प्रॉपर्टी था, ना राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन था। और यहां तक कि जो वेजेस थे, काम की मजदूरी मिलती थी, उसमें भी बड़ा डिफरेंस था। तो उसको लेके एक मूवमेंट शुरू हुई, और उस आंदोलन में जो अग्रणी थी, जो जननी कही जाती है इस दिन की, वो थी क्लारा जेडकिन। तो वहां से मूवमेंट शुरू होने के बाद 1910 में 17 देश, यूरोपीय देश थे सारे, एक उनकी बैठक होती है, और वहां पे 17 देशों की 100 महिलाओं ने हिस्सा लिया, और वहां पे एक प्रस्ताव पास किया गया कि हमें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना चाहिए। तो सबने एक स्वर में इसको पास कर दिया, और 1911 में फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया गया। लेकिन वो यूरोप के कुछ ही देशों में, सारे देशों में नहीं, वो सिर्फ 17 देशों में हुआ था। और 17 देशों में उसको मनाने के बाद वो परंपरा शुरुआत हुई। एक बड़ी मेहनत की कहानी है। कभी ये नहीं है कि जैसे हम मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे और बहुत से दिन मनाते हैं, एडवोकेट डे भी है हमारा, बट यहां एक संघर्ष की कहानी है। जब वो संघर्ष चला 1917 में, रसिया में युद्ध चला हुआ था, तो उस समय रसिया की महिलाएं बाहर निकली, और उन्होंने सिर्फ दो ही बातों के लिए आंदोलन किया कि ब्रेड एंड पीस, हमें शांति भी चाहिए और रोटी भी चाहिए, और रोटी के साथ शांति चाहिए। तो उनकी बात को सुना गया, और उसको सुनने के बाद
आधिकारिक तौर पे 1955 में यूनाइटेड नेशंस ने ये घोषणा की कि 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट किया जाएगा और एक थीम के साथ किया जाएगा। यहाँ पे एक चीज और है कि जो फर्स्ट सेलिब्रेशन हुई थी 1911 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे की, उसका जो थीम था वो था सेलिब्रेटिंग द पास्ट एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। और 2024 का थीम क्या है, इंटरनेशनल लेवल पे है वो थीम, वो है इंस्पायर इंक्लूजन। हिंदी है इसकी समावेशन को प्रेरित करना, बाधाओं को तोड़ना, रूढ़िवादिता को चुनौती देना और ऐसा वातावरण बनाना कि कार्रवाई करना, एक वैसे वातावरण का आह्वान करना जहां सभी महिलाओं को महत्व और सम्मान मिले। ये था इंटरनेशनल सिनेरियो। अब मैं थोड़ा सा यहां भारतीय दृष्टिकोण की तरफ आना चाहूंगा कि हमारा भारतीय दृष्टिकोण क्या है, जहां हम धरती को माता, गाय को माता, वनस्पतियों में तुलसी को माता, नदी को माता ये मानते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण तो इंटरनेशनल लेवल से अलग था। यहां तो हमेशा सम्मान की बात रही। ये तो कालांतर में आक्रांता आए, आक्रमणकारी आए, उसकी वजह से एक ऐसा पीरियड आया जिसकी वजह से महिलाएं पिछड़ती चली गई, या ऐसे कारण बने हमें घर तक सीमित रखना पड़ा। अगर हम महाभारत के समय की बात लें तो वहां पुत्र की पहचान माता से होती थी। आपने सुना होगा बहुत जगह कुंती पुत्रों को कौंते बोला जाता था, और माद्री पुत्र का भी जिक्र हर जगह आता था, माता के नाम से पुत्र को बुलाया जाता था। लेकिन जब बाद में परिस्थितियां विपरीत हुई और इस तरह के हालात बने, दूसरा हमारे तो ग्रंथों में जो श्लोक हैं वो आज के नहीं है, बहुत पुराने हैं। वो एक श्लोक अक्सर कार्यक्रमों में आपने सुना होगा, यत्तर नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्तर देवता। जहां पर नारी का सम्मान होता है, उसकी पूजा की जाती है, वहां पे देवता प्रसन्न होते हैं, देवता निवास करते हैं। हमारा एक पोर्टफोलियो आप देखें सनातन धर्म का, कि शक्तियां किसके पास हैं। ज्ञान की सारी शक्ति, नॉलेज की सारी शक्ति माता सरस्वती के पास। धन की सारी शक्ति हम किससे मांगते हैं, माता लक्ष्मी से। और यदि हमें शक्ति चाहिए तो हम किससे मांगते हैं, माता दुर्गा से। तो हमारे तो स्टार्टिंग से सनातन धर्म में ये चला हुआ है कि माताओं का, महिलाओं का सम्मान सर्वोपरि है। अभी अगले महीने हमारा जो नया संवत शुरू होगा, उन दिनों नवरात्रे होंगे, और नवरात्रों में क्या करते हैं हम, किसका पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं। तो हमारे यहां सम्मान था शुरू से, लेकिन कुछ कारणों से वो कम हुआ। और दूसरी लाइन इसी की क्या है कि हम एक लाइन तो पढ़ के सुना देते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। दूसरी लाइन भी उसी समय लिख दी गई थी, यत्रे वास्तु न पूजन्ते सर्वस्त्र फला क्रिया। जहां औरत का सम्मान नहीं किया जाता, वहां कोई भी पवित्र संस्कार प्रतिफल नहीं होता। तो इस चीज में जहां बहुत पहले हमारे ग्रंथों में इसका बखान आ गया, तो हमें क्या आवश्यकता पड़ी अब आज, और हमारा भविष्य में क्या पुरुषों का योगदान रहना चाहिए कि हम महिलाओं को, अपनी बेटियों को, अपने परिवार की महिलाओं को, अपने समाज की महिलाओं को आगे बढ़ाएं और एक ऐसा कॉर्डियल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करें कि जहां हर महिला आराम से, अच्छी तरह से अपनी इच्छा का काम कर सके। यही हमारी सबसे बड़ी महिलाओं के प्रति सम्मान होगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप
कि एक कर्तव्य ध्वनि से ये आपका मैं सपोर्ट चाहता हूं कि आपको ये बात ठीक लगी, हम एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर देंगे जिससे कि महिलाएं आगे बढ़े, उनका सम्मान बढ़े, उनका महत्व बढ़े। धन्यवाद। Thank you, sir. Today we have come a long way from our historical struggles, and I can so proudly state a fact for the District Courts of Hoshiarpur that the female judicial officers have outnumbered their male counterparts. This reflects empowerment, resilience, and determination. We hope such inclusiveness continues to reflect throughout the legal system and even beyond. We now here have among us Madam Prabjot Kaur, Additional Civil Judge Senior Division Hoshiarpur, who has agreed to share her valuable views with us. Ma'am, please if you could join us on the dais. A very good afternoon to all. Respected Honorable Mr. Justice Alok Jain, Administrative Judge of Hoshiarpur Sessions Division, respected District and Sessions Judge Sir, all the dignitaries seated here, and the members of District Bar Association Hoshiarpur. It is indeed a momentous occasion that we have all gathered here to recognize and celebrate the remarkable contributions of women to society and the legal profession. Not very long ago, we were unfortunately confronted with great gender disparity, which was rather accepted as an established norm. We have all grown up reading about such gender disparities and a continued quest to bring about equality. I can, however, proudly state that the society as a whole has changed a lot, and with the efforts of society and with the concerted efforts, women have now begun to get equal opportunities to excel. As I look around in this very hall, we can easily realize that there are a good number of women, all of whom are steadily climbing the ladders of success. The ratio, the ratio, even if not equal as of today, is fast changing, where more and more women are taking upon themselves responsibilities beyond the four walls of houses. Since the primary focus of our today's celebration is to celebrate the contribution of women not only to the society but to the legal profession as well, I would like to address the young female lawyers, many of whom are seated here. It is your self confidence, belief in self, and quest to excel which will help you to achieve greater heights. If you, as a woman, dare to dream big, there is nothing which could stop you to achieve greater heights. I heartily pray for your success. I take this opportunity to thank the President, members of the Executive, and members of District Bar Association Hoshiarpur for having taken the lead in organizing such a wonderful function. Last but not the least, I would like to thank Honorable Mr. Justice Alok Jain, Administrative Judge of Hoshiarpur Sessions Division, for having spared his valuable time to share his thoughts. Thank you, sir, and thank you all. Thank you, ma'am. And rightly said, no dream is too big, and you can dare to dream as big as you want. I would now like to take this humble opportunity to welcome Honorable Justice Mr. Alok Jain from Punjab and Haryana High Court, who is also the Administrative Judge of Hoshiarpur and himself belongs to a family of lawyers and was himself a member of the bar. I had the opportunity to know Sir a little better when he was here last time to inaugurate the daycare center at the court complex. If there's something I'd like to say from that one brief meeting I had with Honorable Justice, is that our Honorable Justice is surely someone who believes in effective administration and strengthening the bonds. I remember Honorable Justice gave a beautiful piece of advice to all of us, young advocates, that is, to be inquisitive and ask. He said, "You're new to this profession. You must
You can and you should ask your seniors for help. You must have questions, you must learn from their experience. Because once you're 10 years down the lane, they might not give you that wisdom, and your can and may will not hold a good ground. The approach to question, to be informed, to be inquisitive is what adds fresh blood to this system. And now, not taking much more time, I'd like to invite Honorable Justice Mr. Alok Jain to please grace this occasion and share his valuable thoughts with us. Good afternoon to all. Thank you, Divya, for your kind words. I'm humbled. Good afternoon to the esteemed gathering, and I'm honored to deliberate such an important issue that is pertinent for the progress of the present society. We are here to celebrate the presence of women in the society and to celebrate their achievement. I start with a quote from the holy text, Sri Guru Granth Sahib Ji, where Baba Nanak hailed the woman and expresses his reverence from there. From a woman, man is born. Within woman, man is conceived. To woman, he is engaged and married. Woman becomes his friend. Through women, the future generations come. Such enlightened minds celebrate, or I may say, revere women from the core of their heart. From them, the woman is a creator. Everything she is, Janani. But the overall milieu was not like this. From ages, there were people with narrow outlook. Those tried to keep women under many suppressions. Changing times, changing minds resulted in celebrating this day. That is specially meant for women. Secretary Saab told you about the history why Women's Day is celebrated. I'll just add to it that we are celebrating this from I think 1996, as per my information. And it was first celebrated in Russia on 8th of March 1975. And thereafter, it was being recognized by the UN and it is being celebrated all over the world. The main aim of Women's Day is to celebrate the achievements of women in various fields, besides being the homemakers and the roles they play, which could be as artist, a teacher, a lawyer, jurist, an administrator, a politician, or a scientist in every sphere. It is also important to raise awareness about women's rights and gender parity. We can all agree that no country has achieved gender equality yet. There are few places where the concept of gender equality does not even exist. Around the world, women are not given equal opportunities. There are countries where they are denied to raise a point about their lives and how they are treated. Girl child abuse is common in many places where many crimes like child marriage, gender bias are done, and all this discrimination a woman faces is on the basis of one's chromosome. The legal sphere in India has always been part of the gentleman's club. Throughout Indian history, law has been predominantly the forte of men. It was regarded as the educated men's or the gentleman's club or sphere. The path of both powerful women lawyers did not have an easy way out. Powerful women lawyers in India had to fight their way against the Indian mindset that barred women from practicing law at one point of time. Addressing these challenges requires a concrete effort from stakeholders, legal professionals, policymakers, bar associations, and the civil society. We all have to work towards creating more inclusive and equitable workplaces where women are afforded equal opportunity for advancement and leadership. Mentorship programs, diversity initiatives, and flexible work arrangements can help mitigate the barriers faced by female advocates and lawyers. And one thing I would like to join, though it's not written here, is the time management. That is a very important fact because woman has the power to do that. She can maintain the balance. But for that, you have to support. As a man, you should support her. It is your duty to support her. Moreover, we must continue to challenge gender stereotypes and the biases within the legal profession and society at large. By promoting diversity and inclusion, we do not enrich the practice of law, but also uphold the fundamental principles of justice and equality. India, a country known for its rich culture, heritage, and diversity,
is also committed to upholding the principles of equality and justice enshrined in its constitution. Over the years, signal strides have been made towards ensuring gender equality and the empowerment with the Constitution of India serving as a cornerstone for safeguarding the rights of women. There are leading names in our area and people around us. Be inspired by them. The likes of Justice Ritubari, Justice Lisa Gill, Justice Jayashri Thakur, Justice Alka Sareen, and many more. The number of them. Just see the amount of lady judges we have in the High Court, in the Supreme Court. Yes, yes, Madam Amarjot Kaur Bhatti. I can go on, Madam Ritu Tagore, Madam Meenakshi Mehta. There are a lot of them. Yes, absolutely, sir. You can have the list from me later on. No problems at all. I can give you much more. And the large number of the women judges we are having these lower judiciary also demonstrate that yes, things are changing. But are they really changing at the ground level? We need to look into that. I can't comment on the judgments of the Supreme Court. She has the liberty to do so. I am tight-lipped. But nonetheless, there is food for thought. That is very important. Why discriminate just because of the gender? From ages, woman has always been much more superior to a man. It is established. We need to respect them. That is the first thing we need to do. I think every parent should teach their children to respect the gender. Once we start from there, ultimately it will devolve on the society. One thing which is very disturbing that these days is we have laws to safeguard the interest of women. But to some extent, no offense to anybody, we as professionals are misusing that law. Ultimately, when that case falls down, it demeans that woman. We start off with the litigation, we start off misusing the process of law, and it doesn't reach us anywhere. Imagine the plight of that woman who just because of your professional advice initiated a process which you couldn't go ahead with. That responsibility is on us as a professional, irrespective of man or a woman. We need to understand that. The moment we misuse that law, end of the day you are demeaning that woman because that law was for protecting her rights, for giving her justice, not for misusing it. And at some stage, truth will come out. So, therefore, it is my advice to you please be very, very sensible and very responsible before you initiate such proceedings. There have been instances past where women have been able to break the glasses ceiling of the legal fields. The essential belief is that law and order have the signals of reforming society and bringing equality in every sphere. Therefore, the sphere of law should accommodate all respect of gender, religion, caste, or creed. There have been several accounts of powerful women lawyers with regard to their experience as British practitioners. One of the sitting High Court, Supreme Court judges talks of greater predominance of women in law over the years. She further emphasized that women as professionals are no longer like floating entities that moves away from the profession post marriages. She stands for equality, although providing greater importance to merit over anything else. What I understood from that was we have to give good atmosphere. And I am not, I'm sorry for to say, but I am not the one who wants to give sympathy to women. Empower them. They are powerful. Give respect to them. Don't sympathize with them. They need that respect, not your sympathy. So, furthermore, the presence of female advocates and lawyers has facilitated great access to justice for marginalized communities, including women, children, and minorities. Research has consistently shown that diverse legal teams yield better outcomes, as they are more attuned to the needs and experience of a diverse clientele. Therefore, an increasing number of powerful women lawyers are getting a strong financial foothold, with large number of law firms and companies recognizing their work and consequently incorporating them to their businesses. I want to conclude my speech by saying that International Women's Day is dedicated to celebrating the achievements of women in social, culture, and political fields. The day found by the women helps in bringing attention towards the forgotten,
women's rights, and gender disparity in few places around the world. It should be considered a day where everyone acknowledges the value and importance of women in our lives and all around the world. And I would end with saying, respect them. Remember, respect them. Thank you. Honorable Justice Mr. Alok Jain, it's always a pleasure hearing you from your wisdom and experiences. And indeed, women need empathy and not sympathy. And definitely, charity begins at home. We can do that from this bar room, we can do that from our home. Now, I would like to call upon Mr. Surendra Mahajan, who has joined us from Chandigarh, Advocate Sandeep Kumar, Additional Standing Counsel, Union of India, and Mr. Vishal Garg to please come on the stage and facilitate Honorable Justice Mr. Alok Jain, who has graciously occasioned to come here and greeted us with his utmost wisdom. A round of applause. Thank you for coming here and enlightening us with your words. It's always a pleasure hearing you, sir. Thank you. I would now like to call upon Advocate Gitanjali, Advocate Neena Kapoor, and Mr. Ajay Gupta to please come on the stage and facilitate our keynote speaker of the day, Advocate Manisha Agrawal, ma'am. It was a pleasure hearing you, ma'am. Your words were very insightful, and it truly builded a feeling of nation building in all of us. The feeling of oneness that we shall all carry with us today. Thank you for being here, ma'am. I would now like to call upon Advocate Iqbal Das Baba, Advocate Umesh Ghai, and Advocate Bharat Bhushan Sethi to please come on the stage and facilitate our District and Sessions Judge, Mr. Dilbag Singh Johar ji. A huge round of applause. Our learned judge quite often refrains from speaking, but again, I have had the opportunity of hearing from Mr. Dilbag Singh Johal as well, and he's one man of an experience. Now, I would like to call upon the stage Mr. Saurav Sharma from Amritsar, Madam Aarti Rani, and Mr. Navjot Singh Man to please come and facilitate our additional civil judge senior division, Madam Prabjot. Okay. As the profession commands, Madam has gone to resume her office. We shall now proceed forward to honor Mr. Ranveer Singh Kharkaliji, and I would like to call upon the stage Mr. Anirudh Sharma, Mr. S.K. Vyas from Amritsar, and Madam Samriti Kular to please come on the stage and facilitate Mr. Ranveer Singh Kharkaliji. Thank you, sir. I would now like to call upon the stage Mr. Ajay Chopra and Mr. Ranbir Kaushal to please come forward and facilitate Shri Padam Kant Dwivedi ji, National Secretary, Akhil Bharatiya Adhivakta Parishad. Thank you for joining us here today, sir. I would now like to call upon the stage Madam Zeenat Bhatia, Amanpreet Bhatia, and Aarti Bhalla to please come on the stage to facilitate Mr. Vivek Soni ji.
Mr. S.S. Kotli, Anju Chopra, Nirmal Sharma, please be on the stage to facilitate our President of the District Bar Association Hoshiarpur, Advocate Ranjit Kumar. Advocate Tarun Veer, Advocate Padam Kumar Bhardwaj, Advocate Naveen Batra from Chandigarh, please join us on the stage to facilitate Madam Rajni Nanda. I would now like to call upon the stage Deepak Rana, who has joined us from Ludhiana,